वो हिमांशु को मंगलाचरण स्टार्ट करिए। मुझे आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, मैं सेकंड चैप्टर पढ़ लूंगा। हरे कृष्ण। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? जी ब्रो। प्रोजेक्ट आप थोड़ा मतलब थोड़ा इधर थोड़ा मतलब कान में लगा के सुन रहा हूँ अभी थोड़ा, तो आप थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, मैं सेकंड चैप्टर पढ़ लूंगा उसके बाद। ये शुरू करते हैं। बिल्कुल। ओम ज्ञानतिमिरान्धश्रीज्ञानञ्जनशलाकयचमुकाफलदेवाय भोब्रह्महिताय जगदहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। We are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 32, interment in fruitive activities. Text 1. The personality of Godhead said, the person who lives in the center of household life derives material benefits by performing religious rituals, and thereby he fulfills his desire for economic development and sense gratification. Again and again he acts the same way. Text 2. Such persons are ever bereft of devotional service due to being too attached to sense gratification, and therefore although they perform various kinds of sacrifices and take great vows to satisfy the demigods and forefathers, they are not interested in Krishna consciousness devotional service. Text 3. Such materialistic person attracted by sense gratification and devoted to the forefathers and demigods can be elevated to the moon, where they drink and extract of the Soma plant. They again return to this planet. Text 4. All the planets of materialistic persons, including all the heavenly planets such as the moon, are vanquished on when the Supreme Personality of Godhead, Hari, goes through his bed of serpents, which is known as Anantasesa. Text 5. Those who are intelligent and are of purified consciousness are completely satisfied in Krishna consciousness, freed from the modes of material energy. They do not act for sense gratification. Rather, since they are situated in their own occupational duties, they act as one is expected to act. Text 6. By executing one's occupational duties, acting with detachment and without a sense of proprietorship or false egoism, one is posted in one's constitutional position by dint of complete purification of consciousness, and by thus executing so-called material duties, he can easily enter into the kingdom of God. Text 7. Through the path of illumination, such liberated person approach the complete personality of Godhead, who is the proprietor of the material and spiritual worlds and is the supreme cause of their manifestation and dissolution. Text 8. The worshippers of Hiranya Garbha, expansion of the personality of Godhead, हरे कृष्ण प्रभु जी। remain. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु टेक्स्ट 6 रो टिके पर्पटा पढ दबा कि माने एक्चुअली जे जेटा लिखा हैछि से जिसटा केमती करियो पर्पटा टिके पढ दबा। If everyone feels. Here the word nivritti dharma niratah means constantly engaging in the executing religious activities or detachment. There are two kinds of religious performance. One is called
pravritti dharma, which means the religious activities performed by the Gruhamedis for elevation to the higher planets or for economic prosperity, the final aim of which is sense gratification. Every one of us who has come to this material world has the sense of overlordship. This is called pravritti. But the opposite type of religious performance, which is called nirvriti, is to act for the Supreme Personality of Godhead, engaged in devotional service in Krishna consciousness. One has no proprietorship claim, nor is one situated in the false egoism of thinking that he is the God or the master. He always thinks himself the servant. That is the process of purifying consciousness. With pure consciousness, only can one enter into the kingdom of God. Materialistic persons in their elevated condition can enter any one of the planets within this material world, but all are subjected to dissolution over and over again. हिमांशु को कुछ क्लियर हुआ जो आपको जानना है? जी प्रभु जी। Text 8 worshippers of the Hiranyagarbha expansion of the personality of Godhead remains within this material world until the end of 2 parardhas, when Lord Brahma also dies. Text 9. After experiencing the inevitable time of the 3 modes of material nature, known as 2 parardhas, Lord Brahma closes the material universe, which is covered by the layer of earth, water, air, fire, ether, mind and ego, and goes back, etc., and goes back to Godhead. Text 10. The yogis who become detached from the material world, the practice of breathing exercises and control of the mind reach the planet of Brahma, which is far away. After giving up their bodies, they enter into the body of Lord Brahma, and therefore when Brahma is liberated and goes to the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Brahman, such yogis can also enter to the kingdom of God. Text 11. Therefore, my dear mother, by devotional service, take direct shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart. Text 12 to 15. My dear mother, someone may worship the Supreme Personality of Godhead with a special self-interest, but even demigods such as Lord Brahma, great sages such as Santa Kumara, and great munis such as Mariti have to come back to the material world again at the time of creation, when the interaction of the 3 modes of material nature begins. Brahma, who is the creator of this cosmic manifestation and who is full of Vedic knowledge, and the great sages who are the authors of the spiritual path and the yoga system, come back under the influence of the time factor. They are liberated by their non-fruitive activities and attain the first incarnation of the Purusha, but at the time of creation, they come back in exactly the same forms and position they previously had. এটা কি বুঝি পাইলে 12 to 14 টা কৃষ্ণা हाँ प्रभु जी लिखा है कि माने तो लिखा है से लिखा है माने कि जदि जो माने जो ब्रह्मा और ग्रेट सेजेस माने थांती से माने आउ थरे रिटर्न करी आसंदी मटेरियल वर्ल्ड को जेतले आउ से क्रिएशन हुए दे रिटर्न टू द सेम मटेरियल वर्ल्ड अगेन एंड अगेन द सेम सेटा प्रभु तो मे भी राणा प्रभु कहि परिबे मैं थोड़ा समझ नहीं पाया क्या हुआ। मतलब वो जो लिखा है ना अभी 12 से 15 में, तो मतलब वो समझ नहीं है वो 12 से 15 क्या लिखा है। देखिए 12 to 15 में बोल रहे हैं कि my dear mother, someone may worship the Supreme with self-interest, but even demigods such as Lord Brahma, you have to come back to the material again and again. देखिए इसका मतलब भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सबसे इसका आसान एग्जाम्पल क्या होगा, प्रभुपाद, ठीक है,
प्रभुपाद है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, जैसे उस बार बीच में क्लास हुआ था, आप थे या नहीं थे उसमें, तुकाराम प्रभु बता रहे थे पास्ट टाइम में कि प्रभुपाद अपने डिसाइपल को बता रहे थे कि जब कृष्णा बोलते हैं कि तुम जाओ, तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं ये गोस्वामियों के परंपरा में नहीं जाऊंगा, वो तो एक जगह जी सोते प्रभु। हैं। याद है वो पास्ट टाइम जो तुकाराम प्रभु बता रहे थे? जी छठ प्रभु। गोस्वामी की जी तरह प्रभु। मैं जी दर प्रभु। दर नहीं भटक सकता। तो हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए थे। प्रभुपाद स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किस लिए आए हैं? केवल और केवल भक्ति देने के लिए। ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो तो शुद्ध वैष्णव हैं, वो परम भक्त हैं भगवान के, लेकिन वो यहाँ पे आए हैं ताकि दूसरों को भक्ति दे सकें, दूसरों को तीनों मोड़ से ऊपर कर सकें और बाकी चीजें कर सकें। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को भी कई बार मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? ताकि दूसरों का उद्धार कर सकें, या जो नॉर्मल जो टाइम फैक्टर के बाद जो जो चीजें होती है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए नीचे वाला लाइन लिखा है, दे आर लिबरेटेड बाय देयर नॉन फ्रूटिव एक्टिविटीज। नॉन फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब नैशुद्ध कर्म। तो वो लोगों को अपने आप से कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्मा के प्लेटफॉर्म में है, जैसे उस दिन बता रहे थे ना कि नेक्स्ट टाइम इंद्र जो बनेंगे वो बलि महाराज बनेंगे। बलि महाराज तो जी अपने आप में महाजन है। महाजन का मतलब जो परम भक्त हैं भगवान के 12 परम भक्त हैं, उसमें बलि महाराज हैं। लेकिन बलि महाराज भी इंद्र का पद ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट क्रिएशन होगा उस समय इसको चलाना पड़ेगा। तो जो ये जो वर्ल्ड है वो कौन चलाएगा? भगवान के जो प्रिय लोग हैं वही चलाएंगे। तो वो चलाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि ऊपर बैठ के चलाएंगे, उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। जैसे मोदी मोदी को अगर स्वच्छ भारत अभियान करना है तो अपने ऑफिस में बैठ के बोल देगा तो अभियान नहीं होगा, वो खुद ग्राउंड में आएगा या अपने कोई अच्छे खास को भेजेगा। वो पहले झाड़ू मारना शुरू करेंगे, वो चीजों को देखेंगे, उसके बाद फिर वो जो क्रियाक्रम है वो आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जी प्रभु। जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान के जो पार्षद हैं, जिनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, और जो ब्रह्मा जो लॉर्ड ब्रह्मा जो आ रहे हैं इसमें लिखा गया है, इसका मतलब ब्रह्मा तो एक पोजीशन है। उस पोजीशन में फिर कोई एक नया व्यक्ति आ रहा है, एक नया व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है ताकि जी प्रभु। क्रिएशन हो सके। समझ रहे हैं? और ये जो मरीची आ रहे हैं, जी बाकी लोग प्रभु। आ रहे हैं, ये सारा सनत कुमार आ रहे हैं, ये सारा पोजीशन है। जैसे इंद्र आ रहे हैं हम बोलेंगे तो इंद्र तो पोजीशन है, तो आ कौन रहा है? पिछले युग में कोई, पिछले मनवंतर में कोई और आ रहे थे, अगले मनवंतर में हमको पता है कि बलि महाराज आएंगे। तो बलि महाराज कहाँ आ रहे हैं? इंद्र बन के आ रहे हैं। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त, उनको भगवान के दर्शन भी हो गए हैं, तो उनको तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, गोलोक वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी तो कोई चाहिए ना जो ये जी फोर्स प्रभु। ऑफ मटेरियल नेचर से हमको आगे बढ़ाए या ये दुनिया को चलाए। अब मान लीजिए जैसे वही बात है जो तुकार प्रभु जी बता रहे प्रभु। हैं कि हम लोग अगर हम लोग जो भी चीज बनाएंगे हमारे सेंसेस से, तो परफेक्ट बनेगी या इम्परफेक्ट बनेगी? जैसे टेलीस्कोप हो गया या दुनिया की जो भी चीज हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मतलब 100% एक्यूरेट नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन रह जाता है। क्यों मार्जिन रह जाता है? नहीं क्योंकि प्रभु। हम लोग हमारे सेंसेस जो अपने अब इम्परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट चीजों से हम कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरली वो भी इम्परफेक्ट रहेगा। जी तो अगर ये पूरा क्रिएशन को चलाना है तो क्या इम्परफेक्ट लोग इसको चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। और परफेक्ट लोग कौन है? वही लोग नहीं हैं प्रभु। जिन्होंने भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो जो जिन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया वो तो जी अपने आप नैशुद्ध कर्म में आ गए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो इसी वजह से उनमें से कुछ लोगों को आ करके इन चीजों को आगे करना पड़ता है, मतलब बढ़ाना पड़ता है और मटेरियल वर्ल्ड को चलाना पड़ता है। इसीलिए वो आ रहे हैं दोबारा। इसमें लिखा जी। ना, लास्ट लाइन लाइन लिखा फिर जब उनका पढ़िए। सपोज काम खत्म हो जाते, जी मतलब एक सपोज एक जन का काम खत्म हो गया, जो ब्रह्मा के पोजीशन में थे, वो उनका काम खत्म हो गया उस टाइम तक, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो दूसरा कोई और आता है, हाँ, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, मतलब दूसरे कोई दूसरा और कोई भक्त व्यक्ति आता आते हैं ब्रह्मा की पोजीशन में। है। हाँ हाँ, वही वही थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें। अब जितना मतलब मुझे अच्छे से सपोज याद है, अभी तो अभी कारा जो प्रभु ने ब्रह्म बोला है, था। मतलब जैसे अभी जो ब्रह्म है, हम्म। वो अभी सपोज ये उनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो चले जाएंगे, फिर और एक कोई ब्रह्म आएंगे जो हाँ उन अभी उसके बाद संभालेंगे। ये जी जी बोलना ब्रो। चाहते हैं। हाँ, ठीक लेकिन ये ब्रह्मा वाला जो कैलकुलेशन है ना बहुत लंबा है। जी ब्रो। अभी एक्चुअली वो जैसे ज्यादा ही दोबारा प्रभु बताते हैं 14 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर में जी एक एक मतलब पोजीशन चेंज होता है। तो हमको इतना अच्छे से पता है कि अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्रदेव बनेंगे। लेकिन बलि महाराज तो जी भगवान के प्रभु। भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। 12 महाजन माता प्रहलाद महाराज के साथ उनका नाम गिना जाता है, नारद मुनि के साथ उनका नाम गिना जाता है, यमराज के साथ उनका नाम गिना जाता है। तो जी। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे तो नारद देखिए, मुनि पोजीशन है कि ये है, नारद मुनि पोजीशन है कि वो ये पर्सनालिटी है? नारद मुनि पर्सनैलिटी है। पर्सन है। कैसे? हम लोग उस दिन वो कहानी पढ़े थे ना, जिसमें नारद मुनि पहले एक सर्वेंट मेड सर्वेंट के बच्चे हाँ थे, हाँ फिर हाँ दोबारा हाँ उनका हाँ जन्म हाँ। हुआ, जी जी। उस जी प्रभु। तरीके जी से। प्रभु। जी जी ब्रो, प्रभु। नारद मुनि पोजीशन नहीं है, वो भक्त हैं,
उस दिन बता रहे थे वही तुम्हारे थोड़ा में। थोड़ा वही मैं कह रहा हूँ। बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूजन रह जाते हैं, ब्रह्मा बोल रहे हैं फिर ये बोल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, ब्रह्म पोजीशन ये वगैरह वगैरह। इस तरीके से। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई वुड प्रभु जी, रौनक प्रभु, आपको कुछ कॉल आया है क्या अभी? अभी तो फिलहाल मेरे को कोई कॉल नहीं आया है। कौन कोई कॉल करने वाला था क्या? तेजस वाले कॉल कर रहे हैं, इसीलिए आप देखते रहिए थोड़ा फोन, ठीक है? ओके। नेम एंड ऑल ठीक जी से चेक करे दबो। ओके। जी, हरे कृष्ण प्रभु, कमित पढ़न तक। जी ब्रो। टेक्स्ट 16। अरे राजेश को कॉल आ गया। प्रभु जी वो धीरे धीरे कॉल कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी आए, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। ओके 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 ब्रो। जी प्रभु। मैं पढ़ता हूँ। Text 16. Persons who are too addicted to this material world execute their prescribed duties very nicely and with great faith. They daily perform all such prescribed duties with attachment to fruitive results. Text 17. Such persons, impelled by the mode of passion, are full of anxieties and always aspire for sense gratification due to uncontrolled senses. They worship the forefathers and are busy day and night improving the economic conditions of their life, of their family, social or national life. Text 18. Such persons are called three Vargika because they are interested in the three elevating processes. They are averse to the Supreme Personality of Godhead who can give relief to the conditioned soul. They are not interested in the Supreme Personality pastimes which are worth hearing because of his transcendental powers. Proes. Text 19. Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they have averse to the nectar of the activities of the Supreme Personality of Godhead. They are compared to stool-eating hogs. They give up hearing the transcendental activities of the Lord and indulge in hearing of the abominable abominable activities of materialistic persons. Text 20. Such materialistic persons are allowed to go to the planet called Pitraloka by the southern course of the sun, but they again come back to this planet and take birth in their own families, beginning again the same fruitive activities from the birth to the end of the life. Text 21. When the results of their pious activities are exhausted, they fall down by higher arrangement and again come back to this planet. Just as a person raised to his position to a high position sometimes all of a sudden falls. Text 22. My dear mother, I therefore advise that you should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, for his lotus feet are worth worshipping. Accept this with all devotion and love, for thus you can be situated in transcendental devotional services. Text 23. Engagement in Krishna consciousness and application of devotional service unto हरे Krishna कृष्ण प्रभु जी, make आई it वुड लाइक टू आस्क समथिंग। रौनक प्रभु, ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା ମୋର। ମାନେ सपोज माने ଆମ वर्ल्ड रे ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, सपोज ସମସ୍ତେ शुद्ध भक्ति କରିବା स्टार्ट କରିଦେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି शुद्ध भक्ति कला ମାନେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ବି ଆସିଯାଏ ନା ମନରେ, ମାନେ कि संसारଠୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ। मैक्सिमम टाइम ଆମେ we indulge in the thoughts of the supreme personality only। तो मानिए तो सपोज यदि पूरा वर्ल्ड रे समस्ते शुद्ध भक्ति करे स्टार्ट करदेले, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ शुद्ध भक्ति कले तो ସେମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେ टू द ट्रांसेंडेंटल लेवल। ताहले मते कहले ଗୋଟେ କଥା, ताहले ଯଦି ସମସ୍ତେ शुद्ध भक्ति କରିବା स्टार्ट कले, ताहले ଆମେ जो ଆମେ ବି ଯେମିତି ଆମେ सर्वाइव करछु अर्थ रे जेन सर्वाइव करछु, तो आमे सर्वाइव केमती करि परछु, काहे कि ना आमे परस्पर काम प्रति डिपेंडेंट अछु। जेमती वी आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मर्स फॉर फूड, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिस्टिक्स फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन। तो जदि समस्त शुद्ध भक्ति करिकि विरक्ति भाव आनी देले तांका भितरे, ताल तो ए दुनिया चालीबनी, बंद हे जिवो। एक्चुअली एटा एक्चुअली एमिति हुएनी। मो ए क्वेश्चन टा पचार देली तुकाराम प्रभु को, किंतु मोर एटा नथला कि चालूबनी। मोर क्वेश्चन दिला कि जदि समस्त शुद्ध भक्ति कर देले तो मटेरियल क्रिएशन टा सरी जीव, तार दरकार पड़िबनी। किंतु गोटे एटा हुए, एटा गोटे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एटा कबे भी हुएनी। काहे कि हुएनी, काहे कि आमे जो देखुछु, आमे केवल अर्थ बोली गोटे देखुछु, किंतु हमकु एई यूनिवर्स भीतर बुझियार अछि अनंत सोल अछि। बुझंती गोटे सोल नहीं, सोल बहुत गुड़ाक अच्छी।
से बडे हमको बुझिया अछि कि पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड अछि मने करंतु अर्थ ऊपर समस्ते प्योर डिवोटी हे गले तो प्योर डिवोटी हे जिबार एई कार्य नु कि से काम सब छाड़ी देबे काहे कि आपण ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେଖିବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ कोंतु ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମାଜ କି ବାକି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ନିଜର କାମ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ସେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ନେଇକି ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ସ ର କାମ ଅଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରତି ଡିସାଇପଲ କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନା କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବାର ଏ ମନ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢିବା ଭଗବାନ କୋଉଠି ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି कि तुम काम सब छाड़ी दियो भगवान सब कहते फ्रुट्स टा छाड़ी दियो काम तुमको प्रेस्क्राइब ड्यूटीज टा करू था कहीं आमे केमिति बुझी परिबा कि जते समस्त मन में खाई वैराग्य आसीबार थांता तो अर्जुन भितर तो वैराग्य आसी जाइथिला से तो फर्स्ट चैप्टर ही कहिदेला कि प्रभु मु भिक्षा मागी देबी मु सन्यासी हे जीवी मु मागी खाई देबी आपण जहा कहबे मु सेया कर देबी किंतु मु मो बंधु को कि विश्व पितामह को मारी पारिबिनी सेते बेले कृष्ण कहउचंती कि तुमर प्रेस्क्राइब ड्यूटी रा कोन सेटा करि चलो सेटा करिवार निहायती दरकार तमे तुम ड्यूटी रु एटा हे पारिबनी अब गोटे हाइपोथेटिकल सिचुएशन से मने करंतु कि समस्त भक्त हे गले तो एबे हम जो भक्त देखुचंती जे वैरागी होचंती कि जे सब छाड़ी कि आगुआ ये सब करूचंती काहे कि बाकी मानन को करेवा पई टाइम देबा अछि गोटे सिचुएशन रे जेतले समस्त भक्त हे जिवे तो गोटे भक्तर कम्युनिटी ही गेला आज एमिति मो एग्जांपल दोची जुहुरे एते बढ़िया सिस्टम कर जे से माने कि जेते कांग्रेगेशन अछंती समस्त कांग्रेगेशन को मिसी कि गोटे सर्कल बना हिची तो कांग्रेगेशन कोन होए समस्त जेमिति आज हमको किछ दरकार तो हमको मटेरियल लोगों को ऊपर डिपेंडेंट रहबा पड़ुची किंतु तांकर कांग्रेगेशन एते बढ़ी जाईची कि जहां भी दरकार तांकर डिवोटी भितर ही सब मिल जाए आपनको खाइबा दरकार तो काकी गोटे डिवोटी को सेडा थिबो आपनको पिंदिबा कपड़ा दरकार के गोटे डिवोटी को तांकर से दुकानदार थिबो तो से भितर भितर सब हे जाउची किंतु से माने काम छोड़ नांती से माने भी गोटे भक्ति प्लेटफॉर्म पळे आछंती से माने भक्ति करूचंती गृहस्थ अछंती गृहस्थ भी भक्ति करिवे समस्त करूचंती किंतु प्लेटफॉर्म गोटे सेट हे जाईची तो से प्लेटफॉर्म टा पळे आसे जेतेले समस्त भक्त हे जिवे हालांकि एटा हाइपोथेटिकल सिचुएशन अछि समस्त केबे भी भक्त ही पारिबेनी गोटे टाइम रे इन केस भी हुए तो ए प्लेटफॉर्म टा पळे आसे आ हमको बुझिया पड़िबो समस्त जदि पूरा अर्थ रु समस्त पळेले तो अर्थ भलिया जेमति मून प्लैनेट रे भी बहुत बड़ा लोक अछंती सैटर्न यूरेनस सब आडे अछंती बस द डिफरेंस इज हमर बॉडी अलगा तांकर बॉडी अलगा सन प्लैनेट ऊपर भी लोक माने रहउचंती तळे भी रहउचंती याडो तळे भी सातटा एटा प्लैनेटरी सिस्टम अछि या ऊपर भी छटा अछि सब आड लोक रहउचंती रहइबा को बुझंती अनंत कोटि हमर ई प्लेट ई अर्थ ऊपर भी हमर सोल इनफाइनाइट काहे कि गोटे छोटो पिंपुड़ी भितरे भी सोल अछि तो हमर ये बड़े भाबिया कि समस्त पड़ी जिवे तो काहा ऊपर डिपेंडेंट रहइबा हमको बुझिया अछि जितना मैं डिपेंडेंट कथा कहू तो गोटे कोन कहबी भक्तर दृश्यटा सेमिति थाए कि सब किछि भगवान करि दउछन्ति जेमिति समस्त भक्ति करिवे तो भगवान काहे कि हमको सब देबेनी तो भगवान केमिति देबे कि जेते लोक अछन्ति तांको सेमिति हिसाब रे से प्रेरणा देबे कि भगवान मते एई कार्य करिवा को कहिसन्ति जेमिति आमे कोन भाबिया दरकार आमे जहां भी करूछु भगवान हमको एई कार्य करिवा पई चूज करिसन्ति आमे भगवान को ऊपर डिपेंडेंट ही कामटा करू ना हेले कि हम कंपनी ऊपर कि हम कॉलेज ऊपर डिपेंडेंट थाउ सेटा गोटे अरेंजमेंट मटेरियल मोड करिछ हम पई काहे कि हम कर्म सेमिया थिला किंतु जेता हमर कर्मटा भलो हे जिवो तो से टाइम रे एसो प्लेटफॉर्म टा चेंज हे जिवो बुझ पारजंती ठीक है कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कोन नंबरटा थिला एटा टेक्स्ट नंबर text 23 engagement in Krishna consciousness and application of devotional service unto Krishna make it possible to advance in knowledge and detachment as well as in self realization. The exalted devotee's mind become an equipoised in sensory activities and he is transcendental to that which is agreeable and not agreeable. Text 25 because of his transcendental intelligence the pure devotee is equipoised of in his vision and sees himself to be uncontaminated by matter. He does not see anything as superior or inferior, and he feels himself elevated to the transcendental platform of being equal in equality in qualities with the Supreme Person. Text 26.
The Supreme Personality of Godhead is alone in complete transcendental knowledge, but according to the different processes of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatma, as the Supreme Personality of Godhead, or as the Purusha Avatar. Text 27. The greatest common understanding of all yogis is completely attachment for matter, which can be achieved by different kinds of yoga. Text 28. Those who are adverse to the transcendence realize the supreme absolute truth differently through speculative and sense perception, and therefore, because of mistaken speculation, everything appears to them to be relative. Text 29. From the total energy, the Mahat Tattva, I have manifested the false ego, the three modes of material nature, the five elements, the individual consciousness, the 11 senses, and material body. Similarly, the entire universe has come from the Supreme Personality of Godhead. This perfect knowledge can be achieved by the person who is already engaged in devotional service with faith, steadiness, and full detachment, and who is always absorbed in the thought of the Supreme. He is aloof from material association. My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and the relationship. Text 32. Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. Text 33. A single object is appreciated differently by different senses due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunction, he appears to be different. Text 34, 35, and 36. By performing fruitive activities and sacrifices, by distributing charity, by performing austerities, by studying various literature, by conducting philosophical research, by controlling the mind, by subduing the senses, by accepting the renounced order of life, by performing the prescribed duties of one's social order, by performing the different divisions of yoga practice, by performing devotional service, by exhibiting the process of devotional service containing the symptom of both attachment and detachment, by understanding the science of self-realization, and by developing a strong sense of detachment. One who is expert in understanding the different process of self-realization realizes the Supreme Personality of Godhead as he is present in the material world as well as in transcendence. Text 37. My dear mother, I have explained to you the process of devotional service and its identity in four divisions, different social divisions. I have explained to you as well how eternal time is chasing the living entities, although it is imperceptible to them. Text 38. There are varieties of material existence for the living entity according to the work he performs in ignorance or forgetfulness of his real identity. My dear mother, if anyone enters into the forgetfulness, he is unable to understand where his movements will end. Lord Kapila, text 39, Lord Kapila continued, this instruction is not meant for the envious, for the agnostics, or for the persons who are unclean in their behavior, nor it is for the hypocrites or for the persons who are proud of material possessions. Text 40. It is not to be instructed to the persons who are too greedy and too attached to family life, nor to the persons who are non-devotees and who are envious of the devotees and the personality of Godhead. Text 41. Instruction should be given to the faithful devotee who is respectful to the spiritual master, non-biased, friendly to all kinds of living entities, and eager to render service and with faith and sincerity. Text 42. This instruction should be imparted by the spiritual master to the person who have taken the Supreme Personality of Godhead to be more dear than anything, who are not envious of anyone, who are perfectly cleansed, or who have developed detachment for that which is outside the preview of Krishna consciousness. Text 43. Anyone who can meditate upon me with faith and affection, who hears and chants about me, surely goes back home, back to Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna.
पढ़िए प्रभु, कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ दो प्रभु। ये Activities of Kapila. Text 1. Sri Maitreya said, thus Devavati, the mother of Lord Kapila and wife of Kardama Muni, became freed from all ignorance concerning devotional service and transcendental knowledge. She offered her obeisances unto the Lord, the author of the basic principles of the Sakya system of philosophy, which is the background of liberation, and she satisfied him with the following verses of prayer. Text 2. Devavati said, Brahma is said to be unborn because it takes birth from the lotus flower which grows from your abdomen while you lie in the ocean at the bottom of the universe. But even Brahma simply meditated upon you, whose body is the source of unlimited universes. Text 3. My dear Lord, although personally you have nothing to do, you have distributed your energies in the interaction of the material modes of nature. And for that reason, the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation takes place. My dear Lord, you are self-determined and are the Supreme Personality of Godhead for all living entities. For them you created this material manifestation, and although you are one, your diverse energies can act multifariously. This is inconceivable to us. Text 4. As the Supreme Personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. O my Lord, how is that possible for the Supreme One, who has in his belly all the cosmic manifestation? The answer is that it is possible for at the end of the millennium, you lie down on a leaf of a banyan tree, and just like a small baby, you lick the toe of your lotus foot. Text 5. My dear Lord, you have assumed this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge in devotion and liberation. Since the sinful people are dependent on your direction by your own will, you assume incarnation as a boar and as other forms. Similarly, you have appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependents. Text 6. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform basic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chants about him, hears about his pastime, offers him obeisances, or even remembers him. Text 7. Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in the family of dog eaters, such persons are worshipable. Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and pious sacrifices and achieved all the good manners of the Aryas. To be chanting the holy name of your Lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. Text 8. I believe, my Lord, that you are Lord Vishnu himself under the name of Kapila, and you are the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman. The saints and sages, being freed from all the disturbances of the senses and mind, meditate upon you. For by your mercy can only one can only can one become free from the clutches of the three modes of material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. Text 9. Thus the Supreme Personality of Godhead Kapila, satisfied by the words of his mother, towards whom he was very affectionate, replied with gravity. The personality of Godhead said, my dear mother, the path of self-realization which I have already instructed you is very easy. You can execute this system without difficulty, and by following it, you shall very soon be liberated, even within your present body. Text 11. My dear mother, those who are actually transcendentalists certainly follow my instruction as I have given them to you. You may rest assured that if you traverse this path of self realization perfectly, surely you shall be freed from fearful material contamination and shall ultimately reach me. Mother, persons who are not conversant with this method of devotional service certainly cannot get out of the cycle of birth and death. Text 2. Sri Maitreya said, the Supreme Personality of Godhead Kapila, after instructing his beloved mother, took permission from her and left his home, his mission having been fulfilled. 30. As instructed by her son, Devotee also began to practice Bhakti Yoga in that very ashram. She practiced Samadhi in the house of Kartama, which was so beautifully decorated with flowers that it was considered the flower crown of the river Saraswati. 14.
She began to bathe 3 times daily, and thus her curling black hair gradually became grey. Due to austerity, her body gradually became thin, and she wore old garments. 50. The home and household paraphernalia of Kardama, which was one of the Prajapatis, was developed in such a way by dint of his mystic powers of austerity and yoga that his opulence was sometimes envied by those travel in outer space in airplanes. Text 16. The opulence of the household of Kardama Muni is described herein. The bedsheet and mattresses were all as white as the foam of milk. The chairs and benches were made of ivory and were covered by cloth of lace with golden filigree, and the couches were made of gold and had very soft pillows. 17. The walls of the house were made of first class marble, decorated with valuable jewels. There was no need of light, for the household was illuminated by the rays of these jewels. The female members of the household were all amply decorated with jewelry. 18. The compound of the main household was surrounded by beautiful gardens with sweet, fragrant flowers and many trees which produced fresh fruit and were tall and beautiful. The attraction of such gardens was that singing birds would sit on the trees and their chanting voices, as well as humming sounds of the bees, made the whole atmosphere as pleasing as possible. 19. When Devavati would enter that lovely garden to take her bath in the pond filled with lotus flowers, the associates of the denizens of heaven, the Gandharvas, would sing about Kardama's glorious household life. Her great husband, Kardama, gave her all protection at all times. 20. Although her position was unique from all points of view, saintly Devotee, in spite of all her possessions, which were envied even by the ladies of the heavenly planets, gave up all such comforts. She was only sorry that her great son was separated from her. 21. Devotee's husband had already left home and accepted the renounced order of life, and then her only son Kapila left home. Although she knew all the truths of life and death, although her heart was cleansed of all dirt, she was very aggrieved at the loss of her son, just as a cow is affected when her calf dies. 22. O Vidura, thus always meditating upon her son, the supreme personality of Godhead Kapila Deva, she very soon became unattached to her nicely decorated home. 23. Thereafter, having heard with great eagerness and in all detail from her son, Kapila Deva, the eternally smiling personality of Godhead, Devotee began to meditate constantly upon the Vishnu form of the Supreme Lord. 25, 24, 25. She did so with serious engagement in devotional service. Because she was strong in renunciation, she accepted only the necessities of the body. She became situated in knowledge due to realization of the absolute truth. Her heart became purified. She became fully absorbed in meditation upon the Supreme Personality of Godhead, and all misgivings due to the modes of material nature disappeared. 26. Her mind became completely engaged in the Supreme Lord, and she automatically realized the knowledge of the impersonal Brahman. As a Brahman realized soul, she was freed from the designations of the materialistic concept of life. Thus, all material pangs disappeared, and she attained transcendental bliss. 27. Situated in eternal trance and freed from illusion impelled by the modes of material nature, she forgot her material body, just as one forgets his different bodies in a dream. 28. Her body was being taken care of by the spiritual damsels created by her husband Karna, and since she had no mental anxiety at that time, her body did not become thin. She appeared just like a fire surrounded by smoke. 29. Because she was always absorbed in the thought of the Supreme Personality of Godhead, she was not aware that sometimes her hair was loosened or her garments were disarrayed. 30. My dear Vidura, by following the principles instructed by Kapila, Devotee soon became liberated from her material bondage and achieved the Supreme Personality of Godhead, a super soul, without difficulty. 31. The place where Devotee achieved her perfection, my dear Vidura, is understood to be a most sacred spot. It is known all over the three worlds as Siddhapada. 32. Dear Vidura, the material elements of our body have melted into water and are now flowing and are now a flowing river, which is the most sacred of all rivers. Anyone who bathes in that river also attains perfection, and therefore all persons who desire perfection go bathe there. 33. My dear Vidura, the great sage Kapila, the personality of God, had left his father's hermitage with the permission of his mother and went towards the northeast.
34. While he was passing in the northern direction, all the celestial denizens known as the Charanas and the Gandharvas, as well as the Munis and the damsels of the heavenly planets, prayed and offered him all respects. The ocean offered them oblations and a place of residence. 35. Even now, Kapila Muni is staying there in trance for the deliverance of the conditioned souls in the three worlds, and all the acharyas or great teachers of the system of Sakya philosophy are worshipping him. 36. My dear son, since you have inquired from me, I have answered. O sinless one, O sinless one, the descriptions of Kapila Deva and his mother and their activities are the purest of all pure discourses. 37. The description of the dealings of Kapila Deva and his mother is very confidential, and anyone who hears or reads this narration becomes a devotee of the Supreme Personality of Godhead, who is carried by Garuda, and he thereafter enters into the abode of the Supreme Lord to engage in the transcendental loving service of the Lord. Hare Krishna. डाउट था कृष्णा? हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। तो अब अभी कपिल देव कहाँ है सब लोगों को 35 to 34 में नहीं बताए, तो अभी कपिल देव कहाँ है सब ऊपर दिए। Even now, Kapila Muni is staying in the trance for the deliverance of the conditioned souls in the three worlds, and all acharyas or great teachers of this system of Sankhya philosophy are worshipping him. मतलब कहाँ है अभी सब लोग? तो बोले ना अभी नॉर्थ ईस्ट को गए, नॉर्थ ईस्ट को फिर अभी मतलब कहाँ है वो? Not really sure, bro. ये क्या है? Even now, Kapila Muni is staying in trance. Deliverance of conditions within the three worlds. Acharyas. No idea, bro. इसका परपट खोल के कुछ पता कर सकते हैं तो? परपट नहीं है। Oh, great. हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन था। ये जो इसमें बताया कि सांख्य फिलोसफी के एक तरीके से फाउंडर थे कपिल देव, तो सांख्य फिलोसफी के फॉलोवर कौन है अभी? सांख्य फिलोसफी प्रभु, ये सब क्वेश्चन तो तुकाराम प्रभु अगर ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जो हमारे शंकराचार्य होते हैं उनका फिलोसफी सांख्य फिलोसफी होता है या फिर मायावाद फिलोसफी? वो मायावाद फिलोसफी प्रभु। सांख्य तो इसमें आएगा ना, फाइंडिंग द रूट। लेकिन मायावादी फिलोसफी पूरा अलग है। हम देखे थे ना उस दिन, 4 संप्रदाय के बाद अलग से मायावादी स्कूल है शंकराचार्य का। नहीं, सांख्य का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वेदास ना? नहीं, फाइंडिंग द रूट, हाँ, स्टडी ऑफ वेदास से आप रूट को फाइंड करते हो, रूट ऑफ ऑल कॉजेस। और जो भक्ति योग होता है सांख्य फिलोसफी, और एक तो कौन है सांख्य, दो टाइप थे ना, एक फाइंडिंग द रूट और एक वाटरिंग द रूट। वो जितने में डिस्क्रिप्शन था याद नहीं। डिवोशनल सर्विसेज एक्चुअली वाटरिंग द रूट के जैसे होता है, मतलब आप रूट ढूंढ लिए, फिर आप उन रूट को वाटर करते हो, डिवोशनल सर्विस सर्व करते हो रूट को। और सांख्य फिलोसफी से आप रूट को फाइंड करते हैं, मतलब दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, लेकिन एक ही रास्ते में आगे पीछे। ओके, इतना मैं समझता हूँ। मतलब सांख्य भी डिवोशनल सर्विस फिलोसफी में, डिवोशनल सर्विसेज में आता है? नहीं, सांख्य से आप रूट फाइंड करते हैं, रूट को ढूंढ के रूट फाइंड करते हैं, रूट ऑफ ऑल कॉजेस। और ये फिलोसफी डिवोशनल सर्विस है, आप रूट को वाटर करते हैं। रूट को ढूंढना और रूट को वाटर करना अलग है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में है सब। मतलब जैसे परमात्मा रिलेशन, वो सुप्रीम सामूहिक प्रेजेंस रिलेशन, भगवान रिलेशन, वो एक डायरेक्शन में है, लेबल अलग अलग है। एक डायरेक्शन में लेबल अलग अलग है ना, तो वैसे मैं जितना समझ पाया उतना बताता हूँ, जितना समझ पाया। जी ब्रो जी। प्रभु नेक्स्ट अभी ओशियन ऑफ मर्सी रीडिंग, बुक रीडिंग होगा। जी जी ब्रो जी। ओके, आज तो ये कैंटो खत्म हो गया, थर्ड कैंटो।
हरे कृष्णा रामू। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं शेयर करूँ गुरु जी स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करिए, मना तो कर रहे थे गुरु जी, आप कर लीजिए फिर भी।